भारत का उत्तर है विक्रांत। Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 Minutes to Clat. Today I'm going to discuss about an extremely important topic that must have caught everybody's attention in the news media and so on. विक्रांत एक सपने के सच होने जैसा है जिसे आज से 2 दशक पहले देखा गया था। It is indeed a historic day for India's Navy as it welcomes the country's first indigenously built aircraft carrier, the INS Vikrant. This makes India a member of an elite group of the world's naval powers. जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का, which is the commissioning of the India's largest aircraft carrier, which is INS Vikrant. Now, why has it, you could say, caught so much headlines and so much news in recent times is कि इंडिया ने आज तक जो भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते थे, we had never created our own. पहली बार, for the very first time, we have created our own. That is why it is indigenous. Now, there is a story behind as to why has it been named INS Vikrant also in the first place. So ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे नहीं अभी तक. It's just that कि we used to import it from other countries. तो जो हमारा फर्स्ट एवर एयरक्राफ्ट कैरियर था वो हमने 1961 में वी हैड बोरोड इट, और यू कुड से वी हैड बॉट इट, इनफैक्ट नॉट बोरोड इट, वी हैड बॉट इट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इन 1961 and we had named it as INS Vikrant. तो INS Vikrant was the name of the first ever aircraft carrier that India ever had, और उसी के नाम से अभी जो 2022 में हमने खुद का इंडिजिनस जो रिलीज किया है, जो इंडिजिनस जो हमने कमीशन किया है, दैट इज ऑल्सो बीन नेम्ड INS Vikrant. तो जो पुराना वाला INS Vikrant है, that was decommissioned in 1997 and it has been of extreme help to India in various, you could say, events like the 1970 where India-Pakistan war as well. और काफी हद तक वो वाला जो पुराना वाला INS Vikrant था हमारे पास, वो बहुत काम आया था इंडिया को. Now we also need to understand that this is the largest ever indigenously built aircraft carrier in India. Not just the first one, it's very big, right? It has a weight of 43,000 tons. ठीक है, इट कैन एक्चुअली स्टोर, और यू कुड से इट हैज स्पेस फॉर 1600 पीपल. ठीक है, अलग से इट हैज विमेन्स के लिए अलग से कंपार्टमेंट्स है, इट हैज अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इनसाइड इट. 2200 कंपार्टमेंट्स है इसके अंदर. सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन एट वन पॉइंट इन टाइम, यू कुड से ऑपरेट फ्रॉम विद इन दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर. उसके अलावा इट इज 262.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 61.6 मीटर वाइड. सो यू कैन इमेजिन एज टू हाउ वास्ट इज INS Vikrant. Now, how is it indigenously built is 76% of it. 76% of the material used in this particular aircraft carrier has been made in India only. So it obviously bolster our आत्मनिर्भर भारत का जो पॉलिसी है उसको भी एक तरह से आगे बढ़ाता है. So it has been built in India in the Cochin Shipyard Limited in Kochi. ठीक है, काफी टाइम से इसको 2017 में वैसे हम लोग कमीशन करने वाले थे, but it got delayed by, you could say, almost 5 years, and it has been commissioned recently in August 2020 itself. विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है. It is also pertinent to note that it uses a technology called STOBAR technology. STOBAR का फुल फॉर्म है शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी. ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है. नाउ व्हाई इज इट सो मच इन न्यूज एंड हाउ डज इट हेल्प इंडिया? तो हमें ये पता चल गया ओवर द पास्ट एटलीस्ट 3 to 4 years that Pakistan is not only India's rival when it comes to our border disputes. We have a new, bigger, and you could say much more important rival, which is China, which has been creating all kinds of problems. You would know about the China string of pearls theory. China क्या कोशिश कर रहा है? इंडिया के हर तरफ it is trying to make its allies. अगर हम ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो म्यांमार, यू कुड से डिफरेंट अदर कंट्रीज, भूटान एंड सो ऑन, नेपाल एज वेल. चाइना इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि वो उनको अपना एलाई बना ले. वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी बीन मेड एन एलाई.
सिमिलरली जैसे हम्बनटोटा पोर्ट की बात अगर आपको पता हो तो श्रीलंका में इट इज टेकन ओवर द हम्बनटोटा पोर्ट टू कीप एन आई ओवर इंडिया. तो इट इज क्रिएटिंग दैट स्ट्रिंग अराउंड द कंट्री टू create a lot of security related problems for India. In fact, abhi quite recently China also added 2 new vessels, such vessels in its arsenal. तो इंडिया के पास भी आफ्टर एडिंग INS विक्रांत हमारे पास 2 हो गए. सो जो 2022 में INS विक्रांत आया है, इससे पहले 2013 में हमारे पास एक INS विक्रमादित्य भी था, which is already there, अभी भी है वो. तो इंडिया also has 2 aircraft carrier at this point in time. Now, there are very few countries in the world who have these particular carriers in their arsenal. Not a lot of countries can boast about it, and India has come in that special league now. विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है. Now let me help you understand as to what are the other countries who has these kind of aircraft carriers in their arsenal and what are they called again. So the other countries that have the aircraft carrier includes US. तो US के aircraft carrier को हम लोग बोलते हैं USS Gerald R. Ford class. The next country is China. China के हम aircraft carrier को बोलते हैं Fujian. For UK it's called Queen Elizabeth class. For Russia it's called Admiral Kuznetsov. And for Italy it's called Cavour. And for France it's called Charles de Gaulle. तो ये कुछ countries हैं other than India who have their own indigenously built aircraft carriers, and these countries, you could say India has also joined this country as the 7th country who also has its capacity and it has built its own aircraft carrier to bolster the sea defense. आपने देखा होगा quite recently we have done a lot of security deals. हमने राफेल के बारे में पढ़ा था. We had brought Rafale aircraft from France to make sure कि हम एयर को properly secure कर पाए. हमारे जो इंडियन स्काईज है बॉर्डर्स पर भी उनको काफी हद तक सिक्योर कर पाए. इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट कि जब हम राफेल को पहली बार इंडिया में लाए थे ना, तो उसमें से काफी सारे हमने अरुणाचल प्रदेश साइड वाले बॉर्डर पर रखे थे, बिकॉज वी नो कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इस पर्टिकुलर बॉर्डर पर. वी ऑल्सो डिड अ डील ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम विद रशिया. ठीक है, तो इस टाइप की जो सिक्योरिटी डील्स है दैट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग चाइना इज आवर मेन राइवल एंड नॉट पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम. Other than that, it's also pertinent to know some very important facts about India's warships and frigate as well. तो इंडिया का जो फर्स्ट वॉरशिप था that was commissioned in 1960 and it was called INS Ajay. Whereas जो इंडिया का पहला indigenous frigate था that was commissioned in the year 1968 and it was called the INS Nilgiri. Now, obviously, this is 76% indigenously built, but there are certain problems with it again. Now, what are the issues again? इसमें जो भी सब सिस्टम्स होते हैं ना, वो सब सिस्टम्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है in any kind of aircraft carrier. Now, what are those 3 parts? They are float, move and flight. तो अगर इन 3 पार्ट्स को हम डिवाइड करें तो जो फ्लोट वाला पार्ट है उसमें इट इज 90% इंडिजिनसली बिल्ट. अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें विच इज मूव, 60% ऑफ इट इज इंडिजिनसली बिल्ट. और अगर हम फ्लाइट की बात करें दैट इज 30% इंडिजिनसली बिल्ट. तो अभी भी हम कह सकते हैं कि काफी हद तक इट इज इंडिजिनसली बिल्ट, बट और भी काफी सारी कंट्रीज से हमने हेल्प इसमें ली है, तो इट इज नॉट 100% इंडिजिनसली बिल्ट. However, it's a very important step for our country to make sure that we are secured in the seas as well, because China is trying to create a lot of problems through the huge coastline that India has. So India has a coastline of 7517 kilometers in total, and we need to make sure that we secure that entire coastline of the country from China, particularly from this Chinese influence, right? तो इस टाइप के जो करंट अफेयर टॉपिक्स हैं विद कंप्लीट डिटेल, अदर देन द लीगल रीजनिंग एंड लीगल अफेयर और लीगल करंट अफेयर्स टॉपिक, आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल. आप मेरी डेफिनेटली वहां पर भी क्लासेस देख सकते हो. कुछ बैकलॉग आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ यू वुड हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो आप लोग बैकलॉग्स भी कवर कर पाओगे इन क्लासेस में. आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस एवरी डे एट 5 PM एंड एट 9:15 PM फॉर यू गाइस फॉर करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली. इसमें बैकलॉग भी करते हैं, नए टॉपिक्स भी करते हैं. यू कैन जॉइन दोज क्लासेस. यू कैन इनफैक्ट यूज माई कोड केशव लाइव और मालपानी and get 10% off on all those classes, because those classes are going to be extremely helpful for you. We were able to crack a lot of questions in CLAT 22. I will try to do the same for CLAT 23 as well. So if you like my style of teaching, if you understand what I'm teaching you here, you can definitely take a subscription. So that's it about the session on my end. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much, guys.